Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. I am Alia Wahid and you are on the channel of Medicare. So in this video we are going to start about the district probability distribution. So in the previous video we have discussed about the continuous probability, we have discussed about the normal distribution. Now in this lecture we will going to start the binomial probability distribution. Before that, let's consider that binomial probability distribution is a method to find out district probability distribution or district variables. So what are them? So we have to distribute the probability of district random variables. And what are district random variables? They are finite or infinite number, like I have written here. So now let's discuss about the binomial probability. So what is binomial experiment? It is experiment who have Bernoulli triads. What are Bernoulli triads? These are the probabilities which have two outcomes remain same throughout the trials. Okay, so have two outcomes, 50-50% division in them. Like example I have given to you, that you have given a coin and you have to toss it. So you have two probability givens. Okay, you have two outcomes and that remains same throughout. These probabilities or outcome are not going to change. After tossing a coin you will get a head and you will get a tail, and you have a half percentage chance of getting head or tail. So it's mean you have a probability of outcome, means first you have a success. Like if you are a person who have taken the head of the coin, so you will succeed. Success mean you have take the outcome which is of your interest, which is of your head. You want that head comes in a particular coin and it's came and you will succeed out. But if it not came, it's mean you face the failure F, and your outcome of interest is not coming. So there are two probabilities which remain throughout. These trials are called as Bernoulli. An experiment who have these trials, this experiment is called as binomial experiment. And to find out the probability of a particular binomial experiment, this is called as binomial probability distribution. So now let's start its whole detail. So here I have given the probability of success, mean the particular outcome which you need is the P, and the probability of F is the Q. I have donated them. So to find out to the formula to find out the Q is equal to 1 minus P. So what is the formula to find out the binomial theorem? So these are two formulas here which I have written. First is Px is equal to small x, so n over x, Px q n minus x. So this is the formula. X value can be finite. And second formula is this, which is in the summation form. Then I have opened it just, and they are as. So now solve the example 8.1. So in the example 8.1, you have given a coin and you have to toss it 5 times. And probability are same. You have two probabilities of head and tail. So head mean you have to go the success. So its probability is 1 by 2. And the failure is the tail. So its probability is also 1 by 2, means the 50%. So the total area is about so 1 by 2 is equal to 0.5. Okay, and it's also is equal to 0.5. So the total area of the normal distribution curve, so this area is equal to 1, and if I am dividing it into the two parts, they are equal to 0.5, 0.5. So therefore I have written 1 by 2. So now in this question you have given the value of P, which is 1 by 2. The Q is also in this question you have not given the value of P, because P you have to find it by this method. Q you will find out it P and Q are same. Okay, 0.5, 0.5 or 1 by 2. N is equal to 5. You will put this in this formula. It's same as we have explained the binomial theorem. So you have to put n is equal to 5 over 0. 1 by 2 is the value of P, and 1 by 2 is the value of Q. P के ऊपर 0 क्यों लगाया है? क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू यही है.
और n माइनस एक्स होता है तो n 5 माइनस 0 मैंने किया है। सो इसी तरह ये सारा आप करेंगे और एंड में कोई ना कोई आंसर निकालेंगे। अब चलते हैं जी एग्जाम्पल 8.2 के ऊपर। सो दिस इज़ एग्जाम्पल 8.2 जिसमें आपको p दिया हुआ है 3/8, n इज इक्वल टू 5 है और q आपने निकालना है। यू विल फाइंड आउट बाय अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ q विच इज़ 1 माइनस p। तो मेरे पास आया 5/8 और उसको फार्मूले में पुट किया और इस तरह से ये आंसर आया। इन सबको एंड में ऐड नहीं करना है, टेबल बनाना है जिसमें आप लोग लिखेंगे कि x पहले 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था, इस तरह, और फिर उनके नीचे यही वाली वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है। अच्छा, अब 8.3 के ऊपर चलते हैं। इसमें आपको n दिया हुआ है, p दिया हुआ है, आपने p x की वैल्यूज़ डिफरेंट दी हुई हैं। q फाइंड आउट करोगे, उसके बाद x की वैल्यूज़ में ये पुट करते जाओगे। अच्छा, x इज़ इक्वल टू 6 उन्होंने कहा है, सो ये हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर हैं वो 4 तक हैं। इसी तरह x इज़ इक्वल टू 3/2, दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द x विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। And here you have given the x which is less than 2, so less than 2, the fraction is 0, 1 and 2. So find out the this of 1, this is of 0 probability, this is the probability of 1, and this is the probability of 2. I have write all the values, add them, and 8/9 is the answer. In the exercise 8.4, you have given the n, p and q value. You will find out. Put in the formula x is equal to 4 है तो ये आ जाएगा। x यहाँ पर है ये वाला साइन, इट्स मीन कि 4 के तो इक्वल है बट x 4 से बड़ा है। सो यहाँ पर आपने इसको उल्टा समझना है कि छोटा है x। सो x 4 से छोटा 1 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। इन सबको लिखेंगे, ऐड अप करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगी जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है। सो ये एंड में आंसर आपके पास ये वाला आएगा जो मैंने ऊपर लिखा है, x इज़ दिस बाय 6। सो x बड़ा है 6 से, बट आपने इसको क्या समझना है, 6 से छोटा। सो सॉरी जी 6 से बड़ा। सो 6 7 और फिर 8 तक टोटल जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो n है वो इज़ इक्वल टू 8 दिया हुआ है, सो इसलिए हम 8 तक सिर्फ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये आया। अब है कि 3 से x बड़ा है बट 6 से छोटा है। सो 3 से बड़ा है, 3 के इक्वल भी है, 3 4 5 और 6 आ जाएगा। उनका आंसर निकाला और ये आया। ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम के इस चैप्टर से, जो कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल्स थ्योरी में था, और उसका ये चैप्टर नंबर 8 में से हमने 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 और 8.5 एग्जाम्पल्स जो हैं वो कर लिए हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर आज से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।